कुछ भी नहीं, सिर्फ वो कैमरे स्विच होते रहते हैं ना जूम में। फेस पे अचानक से लाइट आता है तो लगता है जैसे कुछ और खोल रखा हो तुमने। वहां फिर वही लगेगा। When are your schools opening? 7 जून से। 5th June or 6th June? 6th June. So we'll continue with the numericals. है ना? तो पहला न्यूमेरिकल ये 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग. A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface as shown. ठीक है. So ये जो ट्रॉली है इसका मास m is equal to 0.5 kg. Now, when the trolley is released, it is found to move at a speed of v 2 meter per second. What potential energy did the spring possessed when compressed? तो तुमने बेसिकली क्या किया है, इस ट्रॉली को पीछे ले जाके गए, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और वहां से तुमने ट्रॉली को छोड़ दिया. ट्रॉली को छोड़ा तो ट्रॉली आफ्टर सम टाइम्स is moving with a speed of 2 meter per second. इनिशियल स्पीड ट्रॉली का क्या रहा था? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट से उसके छोड़ा है. सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, राइट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुआ है, तुमने जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जब तुमने ट्रॉली को पुश किया पीछे की तरफ, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे गया, उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, उस समय all the energy is stored as potential energy. Whatever work you are doing in compressing the spring is stored as potential energy. The moment you release the spring, that potential energy gets converted into kinetic energy. So what you are going to write is potential energy stored in the spring so we'll write potential energy stored in the spring is equal to kinetic energy, increase in kinetic energy. A potential energy is stored in spring is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial kinetic energy तो zero होगा, half into mv square, half into mu square. u zero है तो ये zero हो जाएगा. Half into mass is 0.5 kg. v square is 2 into 2. So this is equal to 1 joule. This whole thing is zero because u is zero. Clear बच्चों? लिख लो अच्छे से.
लिख लिया ना बच्चों सबने? Yes, sir. Next question है, a bullet of mass 50 gram is moving with a velocity of 500 meter per second. It penetrates 10 centimeter into a still target and comes to rest. Calculate the kinetic energy possessed by the bullet and the average retarding force offered by the target. So basically क्या है, आप ये सोचो कि there is a target here and there is a bullet which was moving with a speed. The mass of the bullet is 50 grams. So this is equal to 50 by 1000 kg or 0.05 kg, right? So this is the mass of this. Now it was moving, initial speed is equal to 500 meter per second and final speed when it goes and gets embedded in this, the final speed is 0 meter per second. Now first part, kinetic energy possessed by the bullet. So kinetic energy possessed by a bullet is equal to half mv square. Half into mass is 0.05 or half mu square कर लो. 500 into 500. So ये cancel होके 250 हो गया. Calculate करेंगे इसको. We'll have 250 into 500 into 0.05. So this is 6250 joules. B part कह रहा है average retarding force. So work done is equal to change in kinetic energy, है ना? Final kinetic energy 0, initial kinetic energy 6250 है और retarding force पे कह रहा है ना? तो ये work done is force into displacement is equal to change in kinetic energy. तो kinetic energy पहले 6250 था, बाद में 0 हो गया ये. So force जो retarding force है that is 6250 divided by the displacement 10 centimeter means 0.1 से divide कर देंगे. तो ये 62500 न्यूटन आ जाएगा. This is the resistive force. Clear है बच्चों? Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes. कबीर कहाँ चले गए? हाँ सर. कैमरा ऑन करो बालक. How much energy is gained by a box of mass 20 kg when a man carrying the box wait for 5 minutes for a bus? भाई जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन कुछ होगा क्या? If there is no displacement, what is work done? Work done is also 0, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा है. तो अगर एक person is holding a box at one place, what energy
is being gained by the box? Nothing, right? So A part, when the man carrying the box is stationary, so when the man carrying the box is stationary, there is no work done. By him, and hence energy gained by the box will be 0, and hence energy gained by the box will be 0. B part है, man runs carrying the box with a speed of 3 meters per second to catch the box, right? So energy gain 3 meters per second to catch the bus, ये इससे run कर रहा है. यहाँ पे time energy is gained by the kinetic energy, because the man is moving and the box is also moving. So kinetic energy gained is half mv square. So this will be equal to half into mass of box is 20 kg. And the speed with which he is moving is 3. 3 into 3 कर लेंगे. So ये 10 times हो गया. 3 3s are 9 into 10 is 90 joule. So this is the energy gained by the box is equal to kinetic energy of the box. Energy gained by the box is equal to kinetic energy of the box. So 90 joules. C part raises the box by 0.5 meter in order to place it inside the bus. So यहाँ पे work done is equal to mgh 20 into 10. G का value 10 हो गया और height यहाँ पे 0.5. So this is 100 joules. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? नेक्स्ट पे चले. Yes, sir. Next question is, how much work is needed
to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 kg meter per second. Right? तो अब हमें निकालना है work needed to be done on a ball of mass 50 gram. Mass is equal to 50 gram. That is 50 by 1000. 0.05 kg. How much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 kg meter per second? Momentum P is equal to 5 kg meter per second. So mass दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, इससे हम लोग स्पीड निकाल लेंगे. So work done is equal to kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हम लोगों ने रिलेशन किया था ना, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. याद है क्या तुम लोग? हाँ, हम लोगों ने किया है. सो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m विच इज इक्वल टू द वर्क डन. राइट? सो p स्क्वायर बाई 2m. सो p यहाँ पे दे रखा है 5 इंटू 5 हो गया by 2 into mass, 2 into 0.05. इसको करेंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा. 500 by 2 is 250 joules. So 250 joules आंसर. देखिए बच्चों, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th question. A body of mass 60 kg has a momentum of 3000 kg meter per second. The kinetic energy and the speed of the body. Same formula हम लोग use करेंगे. So here mass is equal to 60 kg. Momentum p is equal to 3000 kg meter per second. Kinetic energy is equal to p square by 2m. Values put कर लेते हैं. 3000 into 3000 divided by 2 into 60. 25. 75,000. इसको हम लोग 7.5 into 10 to the power 4 joules. Second कह रहा था speed of the body half mv square is equal to 7.5 into 10 to the power 4. हाँ जी. सर बट अगर आप के में 2 into 60 के जगह 3600 ही रख लो तो फिर 250 2500 जूल नहीं हो सकता? 2 into 60 की जगह 3600 क्यों लिखेंगे? टू ओ वेट सॉरी मैं स्क्वायर नहीं है ना, 120 हो जाएगा ना. 2 into 7.5 into 10 to the power 4 by mass कर देंगे 60 को. So this is 15 and this is 4. So 1 by 4 into 10 to the power 4 or V is equal to 1 by 2 into 10 to the power 2, 0.5 into 100, 50 meter per second.
क्लियर बच्चों, लिख लिया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a truck weighing 1000 kgf changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes. Calculate the work done by the engine. Work done is change in kinetic energy. वेट इतना है तो मास ऑफ ट्रक विल बी 1000 kg, है ना। kgf में से f हटा दोगे तो मतलब वो kg फोर्स था, अब यहाँ पे kg में मास बता रहे। 36 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर, यू उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, याद है? 5/18 बेटा। किलोमीटर पर आर है ना, आर को सेकंड में करोगे तो 3600 हो जाता है, तो 18 वाला चीज नीचे रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18, इसको कट करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड पता है हमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v square minus u square. Half into mass is 1000 kg. 20 square minus 10 square. Half into 1000. 400 minus 100 is 300. इसको कट करेंगे 150 होगा। 1.5 into 10 to the power 5 joules. This is work done. Second part आपको पावर निकालना है। Power is equal to work done by time taken. So work done is 1.5 into 10 to the power 5. And time taken is 2 minutes, means 2 into 60 कर लेंगे। Yes. 1.5 into 10 to the power 5. 150 by 120. So this is 1.25 into 10 to the power 3. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Next question, 17th one. A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and its velocity is half, find the initial kinetic energy, final kinetic energy. So पहला, initial kinetic energy is half mv square. Mass is 10 kg and speed is 20 into 20. So 20 into 10 into 10 is 2000 joules. Second is final kinetic energy is equal to, अब कह रहा है कि if the mass of the body is doubled, so नया mass m dash is equal to 20 kg हो जाएगा and its velocity is half. Velocity is equal to 20 by 2
10 meter per second. Final kinetic energy is half into m dash into v dash square. So half into m dash is 20 kg, v dash square is 10 into 10. This is equal to 1000 joules. Clear, बच्चों? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Sixteenth one is a cannonball of mass 500 gram is fired with a speed of 15 meter per second. Find its kinetic energy and its momentum. So kinetic energy is half into mass 500 by 1000 into v square. तो मास हम लोगों ने निकाल लिया है 0.5 कर लेंगे. Half into 0.5 into 15 into 15. So 56.25 joules. This is the first part. Second part is momentum, that is P. P is equal to mv. 500 by 1000 into 15. .5 kg meter per second. सब लोग लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes. Fifteenth is a ball of mass 0.5 kg slows down from a speed of 5 meter per second to that of 3 meter per second. Calculate the change in kinetic energy of the body. So initial kinetic energy half m into u square, half into 0.5 into 5 into 5. So 12.5 by 2 is 6.25. Final kinetic energy is half mv square. Half into 0.5 into 3 into 3. So this is 2.25. Change in kinetic energy is equal. देखो initial is greater than final, तो यहाँ पे क्या होगा? Decrease होगा. So change in kinetic energy is initial kinetic energy minus final kinetic energy. 6.25 minus 2.25. 4 joules. और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज है. तुम्हारा 5 days का समर वेकेशन होगा.
26th से 30th May. So you will not have classes. You will have 5 days vacation. Okay, sir. मन्नू बहुत खुश है, पता नहीं खुश है या फिर नहीं. हो गया, लिख लिया? Yes. Next question is, a car is running at a speed of 15 km/h, while another similar car is moving at a speed of 45 km/h. Find the ratio of their kinetic energies. So, kinetic energy of the first car is half into m into 15 km/h है. अभी तो 15 में ही रख लेते हैं, 15 का स्क्वायर. मीटर पर सेकंड में नहीं करते क्योंकि रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो निकालने में वो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा यूनिट. इन द सेकंड कार्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू m इनटू 45 स्क्वायर. अब देखो मास सेम यूज किया है क्योंकि सिमिलर कार बोल रहा है. सिमिलर कार का मतलब दोनों का मास सेम. So that means ratio of the first car, kinetic energy of first car by kinetic energy of second car. Half into m into 225. Half into m into 45 square. I think 2025. Half m gets cancelled. So $25 9 times. 9 by 81 or 1/9. So ratio is 1:9. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes. Two bodies of equal masses are moving with uniform velocities. Find the ratio of their kinetic energies. So first kinetic energy. So kinetic energy 1 by kinetic energy 2 is half into equal masses, half mv square. और दूसरा मास तो सेम है बट उसका स्पीड 2v. So 2v का होल स्क्वायर होगा. So half mm gets cancelled. V square by 4v square. 1 by 4. 1:4. So question 13 तो कुछ और है. क्वेश्चन 13 मेरे में तो ये दिया है बेटा. मेरी पुरानी किताब है ना. क्या लिखा हो तुम्हारे किताब में बताओ. Two bodies have masses in the ratio 5:1 and kinetic energies in the ratio 125:9. Calculate the ratio of the velocity. एक सेकंड.
मैं सुन के एक मिनट धीरे धीरे पढ़ो। हाँ बताओ आप। Two bodies have masses in the ratio रुक, m1 by m2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 5:1, 5:1, ठीक है। and their kinetic energy is in the ratio 125:9. ठीक है, Calculate the ratio of their velocities. हाँ ठीक है ना। देख, kinetic energy 1 by kinetic energy 2 is half m1 v1 square by half m2 v2 square. Kinetic energy 1 by kinetic energy 2 125/9, हाफ हाफ तो कट गया। मास m1 by m2 क्या दे रखा है? 5/1, तो 5/1 into v1 by v2 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब ये 5 को इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ बच जाएगा 25। तो इसको क्या लिख सकते हो? 25/9 को लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू v1 by v2 का होल स्क्वायर। इससे हमारा आ जाएगा v1/v2 इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है? Yes, sir. मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू बुक। लिख लिया सभी ने? Next class. हाँ जी बेटा, लिख लिया? नेक्स्ट है, calculate the decrease in kinetic energy of a moving body if the velocity reduces to half of the initial velocity. Decrease in kinetic energy of moving body. So initial kinetic energy मान लो half mv square. अब velocity reduces to half of the initial velocity. So final second kinetic energy is half into m into ये reduce half का हो गया, half mv square by 4 1/8 mv square. अब ये कह रहा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 into half mv square या 1/4 into kinetic energy of 1. Decrease is equal to kinetic energy 1 minus kinetic energy 2 final. Initial minus final decrease होता है, right? So decrease in kinetic energy. So first का kinetic energy minus 1/4 of, so this will be 3/4 kinetic. Clear बच्चों? Yes.
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next is, if the speed of the car is half, how does its kinetic energy change? So पहला kinetic energy है half mv square. Next kinetic energy is half into m v by 2 square. So 1 by 8 mv square. So first kinetic energy or final kinetic energy by initial kinetic energy 1 by 8 mv square by 1 by 2 mv square. So this is 1/4. Done बच्चों? Written, sir. Yes. Find the kinetic energy of a body of mass 1 kg moving with uniform velocity of 10 meter per second. So kinetic energy is equal to half mv square, half into 1 into 10 into 10. So this is 50. आगे समझ सबको? Yes. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, फिर अगली क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही है. बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर. Bye, sir. Thank you.